हेलो एवरीवन, राव जी एस वेलकम यू ऑल। आज की भारतीय जीके की क्लास हमारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे होने वाली है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, उसको लर्न करते हुए चलिएगा। आपका जो जो भी एग्जाम लगा, लेखपाल हुआ, कांस्टेबल हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन है 71st अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट एंड 86th अमेंडमेंट। राइट ऑप्शन होगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द 11th शेड्यूल वाज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। राइट आंसर होगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट 9A related to municipalities was added by which amendment? 74th amendment, 73rd amendment, 86th amendment, 91st amendment। सही उत्तर होगा 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द 12th शेड्यूल। 29, 18, 22, 15। सही उत्तर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट और 61st अमेंडमेंट। सही उत्तर होगा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। 91st अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट। सही उत्तर होगा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। Article 21A is related to right to equality, right to freedom, education for children age 16 to 6 to 14 years, child labor। सही उत्तर होगा education to 6 to 14 years। Article 45 is related to education for children age 0 to 6 year, women reservation, पंचायती राज, एंटी डिफेक्शन लॉ। सही उत्तर होगा हमारा एजुकेशन 0 to 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्टिकल 51A सब क्लॉज के डील्स विद वोटिंग राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी रिगार्डिंग एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सही उत्तर होगा फंडामेंटल ड्यूटी रिगार्डिंग एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू द 91st अमेंडमेंट, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स in the council, union council of ministers cannot exceed 10% of Lok Sabha strength, 12% of Lok Sabha strength, 15% of Lok Sabha strength और 20% of Lok Sabha strength। सही उत्तर होगा 15% of Lok Sabha strength। In a state, the minimum number of ministers including chief ministers should be 10, 15, 12, 20। सही उत्तर होगा 12। Which language were added to 8th schedule by 92nd Constitutional Amendment Act 2003? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डुगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। सही उत्तर होगा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। Konkani, Manipuri and Nepali were added to 8th schedule by which constitutional amendment act? 71st amendment, 92nd amendment, 52nd amendment और 86th amendment। सही उत्तर होगा 71st amendment act 1992। Sindhi language was added to 8th schedule by which amendment? 92nd amendment, 52nd amendment, 21st amendment और 73rd amendment।
सही उत्तर होगा 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नेशनल कमीशन फॉर SC/ST was established by which constitutional amendment act? 61st amendment, 65th amendment, 44th amendment और 36th amendment? सही उत्तर होगा 65th amendment act 1990। Which constitutional amendment added the 9th schedule to protect land reforms? First amendment, 24th amendment, 25th amendment, 14th amendment? सही उत्तर होगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। दादरा एंड नगर हवेली वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन बाय विच अमेंडमेंट? 12th अमेंडमेंट, 10th अमेंडमेंट, 14th अमेंडमेंट और 36th अमेंडमेंट? सही उत्तर होगा 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। गोवा, दमन एंड दीव वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 10th अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट, 12th अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट? सही उत्तर होगा 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962। पुडुचेरी was incorporated into the Indian Union through which constitutional amendment? 14th amendment, 24th amendment, 36th amendment और 61st amendment? सही उत्तर होगा 14th Amendment Act 1962। Sindhi language was added to 8th schedule by which amendment? 25th amendment, 21st amendment, 44th amendment और 61st amendment? सही उत्तर होगा 21st Amendment Act 1967। Which constitutional amendment made it compulsory for the president to give assent to constitutional amendment bill? 24th amendment, 44th amendment, फर्स्ट अमेंडमेंट और 65th अमेंडमेंट? सही उत्तर होगा 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू वोटिंग एज, म्युनिसिपैलिटीज, राइट टू प्रॉपर्टी और पंचायती राज? सही उत्तर होगा राइट टू प्रॉपर्टी। Which constitutional amendment made Sikkim a full-fledged state of India? 42nd Amendment, 36th Amendment, 24th Amendment और 52nd Amendment? सही उत्तर होगा 36th Amendment Act 1975। Which amendment abolished Part 7 of the Constitution? 7th Amendment, 24th Amendment, 44th Amendment और 61st Amendment? सही उत्तर होगा 7th Amendment Act 1956। Which constitutional amendment made written recommendation of the cabinet necessary for declaring national emergency? 61st Amendment, 44th Amendment, 36th Amendment, 24th Amendment? सही उत्तर होगा 44th Amendment Act 1978। Which fundamental rights was removed from Part 3rd by the 44th Constitutional Amendment Act? Right to freedom, right to equality, right to property, right against exploitation? सही उत्तर होगा right to property। According to the 44th Amendment, which articles cannot be suspended during national emergency? Article 14 and 19, Article 19 and 21, Article 20 and 21, Article 15 and 16? सही उत्तर होगा Article 21 and 20। The voting age was reduced from 21 years to 18 years by which constitutional amendment? 44th Amendment, 61st Amendment, 52nd Amendment और 65th Amendment? सही उत्तर होगा 61st Amendment Act 1989। Special status to the National Capital Territory and City of Delhi was provided by which constitutional amendment? 69th Amendment, 61st Amendment, 36th Amendment और 24th Amendment? सही उत्तर होगा 69th Amendment Act 1991। आगे देखेंगे Part 9B related to cooperative societies was added by which constitutional amendment? 101st Amendment, 97th Amendment,
102nd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट। सही उत्तर होगा 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। The India-Bangladesh Land Boundary Agreement was implemented through which constitutional amendment? 99th Amendment, 100th Amendment, 101st Amendment, 105th Amendment। सही उत्तर होगा 100 Constitutional Amendment Act 2015। The GST was introduced by which constitutional amendment? 100th Amendment, 102nd Amendment, 101st Amendment or 103rd Amendment। सही उत्तर होगा 101st Amendment Act 2016। Constitutional status to the National Commission for Backward Classes was guaranteed by which amendment? 103rd Amendment, 97th Amendment, 105th Amendment, 102nd Amendment। सही उत्तर होगा 102nd Amendment Act 2018। The 103rd Constitutional Amendment is related to GST, Women Reservation, EWS Reservation और Cooperative Societies। सही उत्तर होगा EWS Reservation। Which Constitutional Amendment restored the power of state government to prepare the SEBC list, socially and educationally backward list? 102nd Amendment, 105th Amendment, 97th Amendment और 100th Amendment। सही उत्तर होगा 105th Amendment Act 2021। The 106th Constitutional Amendment Act 2023 is related to GST, NCBC, Women Reservation, पंचायती राज। सही उत्तर होगा Women Reservation। The 106th Amendment provide how much reservation for women in Lok Sabha and state legislative assemblies? 27, 50%, 10%, 33%। सही उत्तर होगा 33%। Which constitutional amendment is popularly known for introducing GST in India? सही उत्तर होगा 101st Amendment Act 2016। Which amendment added provision related to cooperative society in the Constitution? सही उत्तर होगा 97th Amendment Act 2011। तो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी क्लास। इसको रिवाइज करिएगा, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करिएगा, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी क्यूरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।